पास आए। Come unto me. क्या आप संकट के दिन प्रभु के पास आना ठीक समझते हैं? Do you feel good to come to the Lord on the day of the trouble? लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, A statement is given in it आप अपनी मन्नतें पूरी करें। that pay your vows. अगर आपने प्रेयर के लिए बोला तो प्रेयर करें, If you said, Lord, I pray बपतिस्मे के लिए वादा किया तो बपतिस्मा लें, to get baptized, then get baptized. कुछ भी आपने प्रॉमिस किया उसको पूरा करें, Whatever vow you vow, do it. क्योंकि खुदा चाहता है For the Lord wants आप शब्द जो आपने बोला है उस शब्द को परमेश्वर पॉजिटिवली देखना चाहते हैं। for the word that thou hast spoken, God wants them to see in positive manner. और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। And I shall deliver thee. उसने ये नहीं बोला कि मैं कोशिश करूंगा, He didn't say I will try. हो सकता मैं आपको छुड़ा लूं। It may be I will just let you free. यहां मुझे ना एक बात याद आ रही है। And I remember one thing. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ There were elections. ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ And in the jungle, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ। there was elections going on of the animals. ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। Every time the lion becomes a king, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। and someone discussed with the monkey. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। The day we were born, he is the king by his own power. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? What should we do then? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। They told unto the monkey, you stand in the election, we will vote to you. ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ And now the monkey stands in the election. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ All voted in favor of the monkey. ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। Now the monkey becomes the king of the jungle. ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ The next day the lion comes. ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ And he just grabbed hold on the goat's kid and took ਤੇ it ਹੁਣ away. ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Now they all assemble together and go to the monkey. ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। You jumped and became the king. Now let that kid be delivered. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ He said, okay, I'll go. ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ, He went. ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, Oh, jumping. ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ Sometimes to ਕਦੇ this, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ। then to the other tree. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। And in the evening he came back. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, Yes, what's the problem? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, That is a different matter. I could not let it free. ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। But I ran here and there and there is, I did not leave anything. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ, What I want you to understand. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, We do a lot of running around. ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। You cannot win over the world with your running here and there. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਆ, If you want to settle all things in your life, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। you got to complete the rule of the Lord. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। You got to live in the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। God did not say, I will run here and then and deliver you. ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, He has said, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ, His word is ਨਾ true. ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। Never change. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ He says, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। I shall deliver you. ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ? How many of you believe in Him? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, I declare for you, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, wherever you are struck, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ the ਹੈ। Lord's hand is ਉਹ with ਤੁਹਾਨੂੰ you. ਛੁਡਾਵੇਗਾ, He shall deliver ਤੁਹਾਨੂੰ you, ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ, give you strength, ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ। give you power. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ In the name of Jesus. ਆਮੇਨ। ਵਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ How ਹੈ? many of you are understanding what is being told? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਝਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Do you know Satan doesn't allow you, let you to be understanding? He just doesn't want. ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, All his power is on one thing, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। that nothing goes inside of you. ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ When some word goes in that
place. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। Then you will see the anointing of the Lord God, how it works in you. ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ Very few have seen. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। And how the anointing of the Lord God works. ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। For the God has sworn he shall deliver you. ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਮੀਨ ਹੈ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਲਪੂਰਵਕ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। To win you got to come with your strength. ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੋ। It is a battle, I tell you, fight. ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਲੜਾਈ ਹੈ। To speak the word is a fight. ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ? And what was the command of God in the first century? ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ Jesus said, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। till the time you do not receive the power, stay over here in Jerusalem. ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। You cannot preach without the power. ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। You cannot speak the truth words without power. ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Without power you cannot declare into the universe the things for yourself. ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। And the power that is given unto thee to resist. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। Do you know Satan has the power? ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। He has the authority. ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। He has the angels too. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। Running here and there. ਐਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ Do not think like this. ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। He doesn't have the power. ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ We see his power in the Bible. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ We do not preach. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ We ਨਹੀਂ। do not know him. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। We know Jesus and ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ we ਹਾਂ। preach his power. ਆਮੇਨ। Amen. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ No one can speak ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਧੋਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। if he's not sanctified by the blood of the Lord Jesus. ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ। Cursed is the one who doesn't speak in the name of the Lord Jesus. ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Satan is known as his friend. ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। And I want to tell you, start to welcome the divine wisdom into your life. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसने क्या कहा है? What did he say? संकट के दिन मुझे पुकार। In the day of struggle, call. संकट के दिन मुझे पुकार। Call upon संकट me. के दिन मुझे पुकार। In the day of the trouble, call upon me. भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं You है। need not run here and there. परमेश्वर को पुकारें। Call the Lord. वचन में लिखा है It's written in the वो word. तुझे छुड़ाएगा, He shall deliver. छुड़ाएगा, He shall deliver. छुड़ाएगा, He shall छुड़ाएगा, He shall deliver. छुड़ाएगा, He छुड़ाएगा, shall छुड़ाएगा, deliver. छुड़ाएगा। Deliver you. हालेलुया। Hallelujah. मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ I do believe on this word. और वचन में लिखा जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा His word of God says, when I shall deliver तब you, तू मेरी महिमा कर पाएगा। then you will be able to glorify. हालेलुया। Hallelujah. कुछ लोग महिमा नहीं करते Some do not glorify. क्योंकि उन्होंने प्रभु को पुकारा ही नहीं है। They did not call upon वो him. छुड़ाए नहीं गए। They are not delivered. वो किसी ना किसी बंधन के बंधे हुए हैं। They are bonded in some bondage. लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है The word of God today declares. ओके Okay. सुनिए Listen.
धन्यवाद और आराधना Thanksgiving and worship एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है संडे की इबादत का। it's an important portion of the day of the fellowship, that is Sunday. अगर आप बाइबल में भी ऐसा देखना चाहें, And if you would like to look into the Bible, वहां सिखाया जाता है कि संडे आराधना का दिन है। it's taught over there that the Sunday is the day of worship. बाइबल में एक तस्वीर हमें नजर आती है, A picture is seen in the Bible. जब यीशु मसीह एक मिशन के लिए जाना शुरू करने वाले थे। When Jesus was preparing to go on a mission, लिखा है वो जैतून के पहाड़ की ओर गए। he went to the Mount of Olives. सबसे पहले उन्होंने क्या किया? What did he do? गाना गाया। Oh, he sang. बोले आप गाना गाया, गाइए, गाना गाया। किसने? यीशु मसीह ने। Jesus Christ. पतरस उसका साथी जेल में बंद थे, उन्होंने गाना गाया। Peter and his companion in the prison sang. हेलो, Hello. मुसीबत में भी गाना गाना है हमने। You got to sing even in the trouble. मुसीबत में गाना गाएंगे, आपके विरोधी मुसीबत में फंस जाएंगे। Singing in the day of the trouble, your enemies shall be in trouble. मुझे याद है, And I do remember जब हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, when our father went from this world, तब पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला। and then the Holy Ghost told me to do some work. अभी 6 से 7 महीने ही हुए थे। It was a time of 6 to 7 months. मैं अपनी मां के पास गया, I went to my mother. मैंने थोड़ी उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। And I tried to converse with her. उसने मुझे क्या बोला? What did she speak to me? लोग क्या कहेंगे? What will the people say? अभी तो आपका बाप इस दुनिया से गया है, Now just your father has left the world. लोग क्या सोचेंगे अगर हम कोई नया काम शुरू करेंगे तो? If we start some new work, what shall people think? ये बात सांसारिक तौर पर अच्छी है, It looks good as the world it is seen. लेकिन आत्मिक ज्ञान जो आपको बताता है But what the spiritual knowledge tells you, वो है, अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। that is, if you do not value time, time won't value you. कुछ डिसीजन, फैसले आपको मेक करने हैं टाइम के अनुसार। And you got to decide some things as per the time. आप कुछ कामों में रुक सकते हैं, You can stay for some works. उसमें स्टे आ सकता है, There can a stay come in it. लेकिन आप शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। But you won't be ashamed in the name of Yeshua the Mashiach. देखो, जब फ्लाइट फ्लाई करती है, उड़ता है जहाज, When a plane is about to take off, ऐसा कोई जहाज नहीं है जो फ्लाई करते समय फ्यूल नहीं खाता। and there is not a single plane who doesn't drink fuel when it flies. क्योंकि फ्यूल खाने से उसके अंदर ताकत आती है। For as it consumes the fuel, the power is generated. लेकिन ज्यादातर जहाज ऐसे भी हैं जो एक जगह से उड़ान भरते हैं और रास्ते में स्टे करते हैं, फिर आगे जाते हैं। And there are some planes that just make a flight from one place, land at a place, and then again flies. आप उस जहाज की मानंद हो सकते हैं। You could be like that plane.
कुछ जहाज 2 घंटे, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 10, कोई 12 और कोई 20 घंटे की स्टे भी होती है। And there is a stay for some planes like 2, 4, 6, 8, and even 10 to 12, 20. पर इसका मतलब ये नहीं है That doesn't mean कि आप देरी होने से उदास हो जाओ। that you got saddened by the delay. अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य आपने स्टार्ट किया है, Any work you have started in your life, अगर वो उसमें आप रुक गए हैं, and if it is stopped somewhere, उसका एक बड़ा रीजन है। a reason that is great one. उसमें भी आपकी भलाई के लिए परमेश्वर अपनी योजना को तैयार कर रहे हैं। God is planning for you good. उदास ना होइए कभी भी, Be not saddened. कभी उदास नहीं होना आपने, Never be saddened. क्योंकि प्रभु यहोवा का वचन ऐसे कहता है, For the word of the Lord God says, जब आप संकट में हो मेरे पास आना, when you are in trouble, come unto me. मुझे पुकारना Call upon me. और मैं तुझे छुड़ाऊंगा I will deliver thee. और तुम मुझे महिमा दोगे। And thou shalt glorify me. मतलब ये हुआ, That means जब प्रभु हमें छुड़ाए, when God the Lord delivers us, उसके बदले में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, and for the deliverance, what he demands from you, क्या मांग रहा है वो? what is he asking from you? वो मांग रहा है What he's asking is परमेश्वर की महिमा, that God be glorified, परमेश्वर की आराधना, God be worshipped. जो यहाँ सुबह संडे और थर्सडे होती है, That is being done over here in the mornings, Thursday and Sunday. आपने उसमें आकर परमेश्वर की महिमा करनी है। You got to be in this fellowship and glorify God. दुनिया का पहला आदमी First man of the जो world अदन के बाग में था, in the Garden of Eden. वो परमेश्वर के साथ क्यों जुड़ा हुआ था? Why was he in relation with God? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करता था। He used to glorify God. अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, If you won't glorify God, आप चर्च आते हैं जी, बहुत अच्छा करते हैं आप, you do good when you come to the church. लेकिन आप चर्च तो आते हैं, You do come, लेकिन संसारिक बुद्धि के साथ आते हैं। but you come with the wisdom that is of the world. मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब वो लेट हो जाते हैं भाग के आते हैं, I've seen some when they get late, they run over here. लेकिन मुश्किल ये है वो सुबह बिस्तर टाइम पर नहीं छोड़ते। The problem is they do not leave the cot in the morning in time. संडे वाले जो सुबह के काम हैं वो शनिवार शाम को नहीं करते। The course to be done on Sunday, you should be doing it in the Saturdays. अगर आप डिवाइन विजडम को लेंगे, प्रभु दिखाएगा तू मेरा बंदा है। If you use divine wisdom, God will show you are my man. प्रभु दिखाएगा तू मेरी बंदी है। The God will show you you are mine. प्रभु दिखाएगा तू मेरा नौजवान The है, Lord will show you are my young boy. क्योंकि परमेश्वर का असूल जो है उसको बनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। But to just remain in the laws and the statutes of God, it is the responsibility of you. दुनिया का पहला आदमी The man first who won, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, who was given responsibility. लेकिन वो जिम्मेदारी पर क्या हो गया? What did he do with that responsibility? वो जिम्मेदारी से मिस हो गया। Oh, he got slack and missed his responsibility. जब भी उसने परमेश्वर के साथ Whenever took God, उस वादे को तोड़ा, he broke the word with God. परमेश्वर के साथ उसकी रिलेशनशिप खत्म हो गई। The relation bound with God was broken and separated from him. आप चर्च में आते हैं, You come to church, बहुत अच्छी बात है, so good. लेकिन क्या आप परमेश्वर के रिश्ते में हैं? Are you still in relation with God? आपको परमेश्वर रिश्ते में देखना चाहता है, God wants to see you in relation, आज वाले रिश्ते में नहीं, not the one that is the world. पहले वाले रिश्ते में। The first one. पहले वाला रिश्ता, The first one. जब आपने उसको दिखाया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, When you show what I can do for you. जब आपके जीवन में पहली गवाही आई, When the first testimony came in you. आप कैसे प्रभु के साथ चलते थे, How you used to walk with the Lord God.
उस समय आपके पास आने के लिए साधन था या नहीं था, लेकिन आप चर्च में टाइम पे होते थे। You had vehicle or not, but you were in the church in time. जैसे जैसे आप पुराने विश्वासी हुए, As you start to grow an old believer, आपका प्यार प्रभु के साथ ठंडा पड़ गया। your love with the Lord grew cold. परमेश्वर आज आपको फिर से उस प्यार में देखना चाहता है, Today the Lord God wants to see you in the first love. क्योंकि उसका प्रेम घटा नहीं For है। his love has not yet decreased. वो आपसे उतना ही प्रेम करता है। He still loves you the same. इसलिए आज उसका ये वचन है, This is the word of his. मैं चाहता हूँ I want संडे तू मुझे धन्यवाद की भेंट दे। that on Sunday you offer me the thanksgiving as an क्यों offering. प्रभु आज आपको ये मैसेज दे रहा Why है? the Lord is delivering you this message? क्योंकि वो आपको इसके बदले में, इसका मायना है, कुछ देना चाहता है। That means in lieu of this thanksgiving, He want to give you something. इसलिए वो आपको बता रहा है, He's telling you, ऐसा करो, do likewise. ये मुझे पसंद This है, is what pleases me. इससे मैं आपके बंधन तोड़ूंगा, This is how I break your bondage. इससे मैं आशीष दूंगा, I shall bless you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा, I shall deliver you. मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। I shall be your God. अपनी आंखें बंद करें, Oh, closing up your eyes. परमेश्वर से वादा करें Make a covenant with the Lord God. कि तुम पवित्र दिन में धन्यवाद के समय उसकी आराधना में आकर उसे प्रसन्न करोगे, That you shall please Him on the holy day, on the Sunday, with the thanksgiving as an offering. ताकि वो आपको देना चाहे जो देना चाहना है, So that He is able to give you what He has willed to give you. जो आपने प्रभु से मांगा है, What you have asked of the Lord, प्रभु वो आपको देना चाहते हैं। God wants to give it to you. इसका कोई और अर्थ नहीं है, There is no other meaning of this. एक कोई मीनिंग है, All it means, परमेश्वर जो तुसी मंगया थानू देन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। what you ask, God is ready to give it to you. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। What you prayed, the Lord is ready to answer you your prayers. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ And He wants ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। that you receive His word from this holy altar.